Hello friends, today we will discuss about a question which was asked in the previous MBBS paper, a clinical based question. So the question was, a 30-year-old male patient underwent right partial parotidectomy surgery. क्या करा गया है उसका? parotidectomy surgery. After 1 week he came to OPD and complained of sweating on the right cheek after eating. एक हफ्ते के बाद वो OPD में आया एंड कंप्लेन ऑफ स्वेटिंग, यहाँ पर स्वेटिंग हो रही है ऑन द राइट चीक खाना खाने के बाद में. एक्सप्लेन्ड anatomical basis of sweating while eating. Discuss the nerve supply of the parotid gland. Discuss relations and structures within the parotid gland. So first we'll discuss about the A part of it, that is anatomical basis of sweating after eating. Yes, so the answer will be this is occurring because of Frei's syndrome. Removal of the parotid gland, sometimes auriculotemporal nerve and great auricular nerve gets damaged. Auriculotemporal nerve is responsible for the secretomotor और parasympathetic supply, that is salivation के लिए responsible है कौन सी nerve? Auriculotemporal nerve. Great auricular nerve is responsible for सेंसरी क्यूटेनियस सप्लाई, दैट इज फ्लशिंग एंड स्वेटिंग. ठीक है, तो स्वेटिंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. वी हैव टू लर्न दिस. और जो सलाइवेशन है उसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व. दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न. नाउ ड्यूरिंग रीजनरेशन पेरोटिडेक्टोमी हो गई. ठीक है, मीन्स पेरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया, तो साथ दोनों नर्व्स जो हैं वो कट गई. ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज ऑल्सो बीन डैमेज्ड एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज ऑल्सो बीन डैमेज्ड. बट आफ्टर पेरोटिडेक्टोमी then what happened? There is during regeneration, जब regenerate हुआ, these secretomotor fibers may grow into and join the sensory fibers. Means auriculotemporal nerve fibers may grow and join into the great auricular nerve fibers. So whenever such a person chews, जब वो person चबाएगा, means for salivation will increase, that is secretion of saliva occurs by the stimulation of auriculotemporal nerve, and redness, flushing and sweating will also occur due to the stimulation of great auricular nerve. So this syndrome is known as Frei's syndrome. Get it? So this is how you have to write in the exams. Okay. Now the second part of it, that is nerve supply of the parotid gland. We have to divide the nerve supply into parasympathetic and sympathetic and sensory pathway. So parasympathetic, first of all, parasympathetic pathway, that is by auricular temporal nerve. There is a funda also for this, that is para itna garam tu thermometer ले और आग फेंक. Para means P for pons, then I itna inferior salivatory nucleus, then G glossopharyngeal nerve, para itna garam, 2 tympanic branch, thermometer tympanic plexus, le lesser petrosal nerve, then or otic ganglia, aag auriculotemporal nerve, and phenk parotid gland. So what is the funda of this? Para itna garam, G means that is glossopharyngeal nerve. Okay, para itna garam to thermometer ले और आग फेंक. You have to remember, right? para itna garam to thermometer ले और आग फेंक. Okay, so now next, sympathetic by the plexus around the external carotid artery, preganglionic fibers by the lateral horn of T1, postganglionic from the superior cervical sympathetic ganglion. Right? So preganglionic कहाँ से आएंगे? lateral horn of T1 से, जहाँ से thoracolumbar शुरू होता है. ठीक है, sympathetic का दूसरा नाम क्या है? thoracolumbar outflow from T1 to L2. तो T1 से preganglionic fibers and postganglionic from the कोई ना कोई ganglia होगा, that is superior cervical sympathetic ganglia. Now sensory nerve supply to the gland by auricular temporal nerve and to the parotid fascia or skin by the great auricular nerve. Same जो आपको दो supply बताई गई थी, auricular temporal nerve and great auricular nerve. Okay. Now the third part of this question, that is relations of the parotid gland.
So first of all we should draw a diagram, and we should see also that diagram, this diagram, right? Structures related to the, this is the apex part, right? So from the apex you can see the veins are related, that is anterior and posterior relation, anterior posterior divisions of the retromandibular vein, cervical branch of the facial nerve. So this are the structures related to the apex of the parotid gland, right? So now we can see what we have to write, that apex is related with cervical branch of the facial, cervical branch of the facial nerve and two divisions of the retromandibular vein, right? Now surfaces, okay, there are or base, then superficial surface, anteromedial surface, and then posteromedial surface. Okay, so basically there are four surfaces in the parotid gland region. We have to see, and we have to write the relations of the surfaces one by one. Superior, superficial, anteromedial, posteromedial, right? So there are four surfaces. You can see the diagram again. The surfaces, one diagram is also there, this diagram, right? These are the diagrams from the BD Chaurasia. So you can see the surfaces here. This is the superficial surface. This one, this surface is the superficial surface, right? This is the posteromedial surface, this whole. This is the anteromedial surface, right? So three surfaces are visible over here: superficial surface, anteromedial surface, posteromedial surface, right? And the superior surface is this part, that is base. Okay, and so these are the four surfaces: superior surface, superficial surface, anteromedial surface, and posteromedial surface, right? So now we'll study what are the relations, right? First we'll read about it. The superior surface is related to the cartilaginous part of external acoustic meatus, the posterior surface of the TM joint, the superficial temporal vessels, and auricular temporal nerve. So four structures are there on the superior surface, right? Now we'll see the diagram. This, see, on the external acoustic meatus. So first is this, the cartilaginous part of the external acoustic meatus. Second is the TM joint, which is present somewhat over here, right? Then two structures are also there: auricular temporal nerve and superficial temporal vessels. So I think ये आपको लर्न हो गया होगा कि सुपीरियर सरफेस किससे रिलेटेड है: auricular temporal nerve, superficial temporal vessels, cartilaginous part of the external acoustic meatus, and surface of the TM joint. Okay, now हमने एपेक्स के रिलेशंस कर लिए हैं, हमने सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस कर लिए हैं. नाउ देयर आर थ्री सरफेसेस मोर: सुपरफिशियल सरफेस, एंटीरोमीडियल एंड पोस्टीरोमीडियल सरफेस. सो नाउ सुपरफिशियल सरफेस. सुपरफिशियल सरफेस मीन्स जो ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रही है, ठीक है. तो दैट सरफेस रिलेटेड टू सेम स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड समवॉट लिम्फ नोड्स, है ना. तो ये तो हमें याद रह ही जाता है कि सुपरफिशियल सरफेस जो सबसे सुपरफिशियल आ रही है, ठीक है. अब हम जो मेन है दैट इज एंटीरोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरोमीडियल सरफेस, जो आगे की तरफ की सरफेस है, जो पीछे की तरफ से रिलेटेड है. एंटीरोमीडियल सरफेस रिलेटेड टू द मैसेटर, द TM joint again, the ramus of mandible, medial pterygoid, and some branches of the facial nerve, ठीक है. So 5 structures are there on the anteromedial surface. तो हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं. This diagram you have to learn for the anteromedial surface and the posteromedial surface. ये हमें anteromedial surface दिखाई हुई है, right?
so masseter, okay, medial pterygoid, okay, ramus of mandible, some branches of the facial nerve एंड अ पार्ट ऑफ द TM जॉइंट जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो रिलेटेड हैं एंटीरोमीडियल सरफेस पे। M सेम masseter, medial pterygoid, mandible, 3 M are there on the anteromedial surface, some branches of the facial nerve and TM joint, okay. Then on the posteromedial surface, see this one, this whole is the posteromedial surface, this one. So the structures related over here are what we have written, the relations of the posteromedial surface. It is molded to the mastoid and the styloid process in the structure. The mastoid process with the sternocleidomastoid and the posterior belly of the digastric, styloid process with the structure related to it, external carotid artery and facial nerve, okay. So from this diagram, the posteromedial surface is related with the mastoid process. This one is the mastoid process with 2 muscles, sternocleidomastoid and posterior belly of digastric. Styloid process with its attached muscles. There are 3 muscles attached to the styloid process. एक styloid apparatus होता है, उस पर भी कभी कभी short note आता है। तो styloid process पे 3 muscles attached होती हैं. One is stylohyoid, styloglossus, stylopharyngeus, okay, and these 3 muscles are supplied by different nerves. Stylohyoid is supplied by facial nerve, styloglossus is supplied by hypoglossal nerve, and stylopharyngeus is supplied by glossopharyngeal nerve, okay. Now, so the structures related are the styloid process with its attached muscles, mastoid process with the 2 muscles, external carotid artery is also related with it, and some branches of the facial nerve, and you can write internal carotid artery, internal jugular vein also, okay. Now हमने क्या क्या कर लिया है, हमने एपेक्स कर लिया, उसके रिलेशन देख लिए। उसके बाद हमने 4 सरफेसेस देखी। कौन कौन सी? सुपीरियर सरफेस जिसको हमने बोला बेस, देन सुपरफिशियल सरफेस, देन एंटीरोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरोमीडियल सरफेस। तो 4 सरफेसेस हो गई, 1 एपेक्स हो गया। नाउ बॉर्डर्स, हाउ मेनी बॉर्डर्स आर देयर? सो देयर आर 3 borders basically. Anterior border, here it is visible, this one is the anterior border, this is the posterior border, this one is the anterior border, this one is the posterior border, this one, okay. So anterior border, posterior border and the medial border, ये वाला जो medial है जो हमें दिखाई दे रही है, this one is the medial or pharyngeal border which is related with the pharynx, ठीक है. Anterior border is related with the parotid duct, ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व एंड ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, ठीक है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये जो बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है फ्रंट में, दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। तो हमें ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व दिखाई दे रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स हमें दिख रही हैं, ये हमें पेरोटिड डक्ट भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको लर्न हो गया कि एंटी बॉर्डर में पेरोटिड डक्ट, फेशियल नर्व, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स। पोस्टीरियर बॉर्डर ओनली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, फेरिंजियल बॉर्डर फेरिंग्स, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें लर्न करना नहीं है। एंटीरियर बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा था, दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर विच इज़ मेनली रिलेटेड। पोस्टीरियर बॉर्डर में आपका सिर्फ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, ये आप वापस से देख सकते हैं, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड दिख रही है यहाँ पे। This is the sternocleidomastoid which is present over the posterior border, ठीक है। And on the anterior border is the some branches of the facial nerve here, parotid duct is also present here and transverse facial vessels, and this one is the pharyngeal border where it is wall of the pharynx is related. So हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने apex हो गया, हमने 4 surfaces पढ़ ली, हमने 3 बॉर्डर्स पढ़ ली। तो रिलेशंस में आपको ये सब कुछ लिखना होगा, ठीक है, लाइक दिस, जैसे हमने लिखा है। जब आके रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो हमें एपेक्स देना है, उसके 2 रिलेशन देखने हैं, सरफेसेस लिखनी हैं, उसके रिलेशंस लिखने हैं, एंड बॉर्डर्स हैं, उसके रिलेशंस लिखने हैं। ये डायग्राम बनाना है आपको, ये दोनों डायग्राम्स यू हैव टू प्रैक्टिस,
Then structures within the parotid gland. What are the structures from medial to lateral side? These are as follows: arteries, veins, nerves and lymph nodes. ठीक है, structures within the parotid gland कौन कौन से हैं? arteries कौन सी है? artery, external carotid artery mainly with its two branches, that is maxillary and superficial temporal, जो terminal branches हैं. veins, retromandibular vein, nerve, facial nerve, again it is divided into two branches, temporofacial, cervicofacial. तो टेम्पोरल जाइगोमैटिक टेम्पोरोफेशियल की ब्रांचेस हैं, सर्वाइकोफेशियल की ब्रांचेस हैं, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. इसका भी एक फंडा याद करने का, फेशियल नर्व इनटू तू ज़्यादा बकवास मत कर, तो ज़्यादा बकवास मत कर. तो टी फॉर टेम्पोरल, ज़्यादा, जेड फॉर जाइगोमैटिक, बी फॉर बक्कल, एम फॉर मार्जिनल मैंडिबुलर, बकवास मत कर, सी फॉर सर्वाइकल एंड लास्ट इज lymph nodes. Okay, so we can see now the diagram structures within the parotid gland. You can see over here also. इसमें आपको within the parotid gland के structures भी दिखाई दे रहे हैं. artery में हमने बोला था external carotid artery, right? This one is the external carotid artery with its two आपकी इसकी terminal branches होंगी, वो भी इसके अंदर ही present होती हैं. Then vein is the retromandibular vein. Nerves is the mainly is one, that is facial nerve. ठीक है, this one is the facial nerve and some lymph nodes. Okay, so the question आपको ये पूरा इस तरह से क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से पेपर करना होता है. ओके, गुड लक.